Welcome, student, to the new session of Newton's laws of motion. In previous class, we have covered the apparent weight, apparent mass, and apparent acceleration. तो सबसे पहले हम इन पर कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे. We'll solve some number of questions on it. Okay, चलिए स्टार्ट करते हैं. आज का पहला क्वेश्चन. Mass of 1 kg is suspended by a thread. It is lifted up with an acceleration 4.9 meter per second square. Second, it is lowered with an acceleration 4.9 meter per second. The ratio of tension is. This is the question which we have taken from the previous NEET paper. तो आप इसको नोट कर लीजिए. तो फर्स्ट केस में द लिफ्ट इज मूविंग इन विच डायरेक्शन? वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन. लिफ्टेड अप विद एन एक्सेलरेशन. तो हमेशा याद रखिए when lift is moving upward, so the tension in the string is mg plus ma. Here a is g by 2 because it is g by 2. So it is 3 mg by 2. When lift moves downward, the tension in the cable thread will be mg minus ma. mg minus mg by 2. So it will be mg by 2. So tension in upward cases upon tension in downward direction will have ratio 3 mg by 2 upon mg by 2. So mg by 2 will be cancelled. 3 upon 1. So the answer is 3:1. तो आपको हमेशा याद रखना चाहिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना चाहिए, वो ये है tension in the cable is mg plus ma when it moves vertically upward. और जब वर्टिकली डाउनवर्ड मूव करेगा तब टेंशन की वैल्यू क्या होगी? mg minus ma. और एक्सेलरेशन a is given. एक्सेलरेशन a is given. देखिए आप जानते हैं कि g क्या होता है? 9.8. तो g by 2 कितना होगा? 9.8 divided by 2, 4.9. So this is the question I have taken it from previous NEET paper and note it down. So are you done with this question? बहुत सिंपल क्वेश्चन था. पहले मास क्या जा रहा था? वर्टिकली अपवर्ड मूव कर रहा था. Then in second case it is moving in vertically lowered with an acceleration 4.9 meter. अब ये 4.9 meter
पर सेकंड स्क्वायर किसके इक्वल है, g/2 के इक्वल है। इसको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और एक बार फिर आपको मैं ये सब नोटिफाई कराना चाहता हूँ, हमेशा याद रखिए in vertically upward direction tension is given by mg plus ma. If mass is lowered with acceleration a, then tension is mg minus ma. And when no acceleration acts on the system, say a is 0, tension is mg. A is 0 implies that at rest or moving with constant speed, moving with constant speed. तो ये तीन बातें आपको क्या है याद रखनी है। इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन है जो 2009 में नीट के एग्जामिनेशन में आया था। हम वहां से उसको इस क्वेश्चन को लिफ्ट करेंगे एंड वी विल सॉल्व दैट क्वेश्चन। तो देखिए, द मास ऑफ ए लिफ्ट is 2000 kg. When the tension in the, अब देखिए क्वेश्चन, when the tension in the supporting cable is 28,000 Newton, 28,000 Newton, then its acceleration is the question has got 4 answers. 30 meter per second square downward. Second question, second answer, 4 meter per second square upward. Third answer, 4 meter per second square downward. Fourth answer, 14 meter per second square upward. NEET 2009। तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट्स। अब देखिए, हम ये सपोज करते हैं कि मान लीजिए जी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो वेट ऑफ लिफ्ट क्या होगा सबसे पहले ये देखते हैं। 2000 into 10, that is 20,000 न्यूटन। 20,000 न्यूटन, ये हो गया वेट ऑफ लिफ्ट। और ये देखिए, अब टेंशन इज मोर देन 20,000, दैट मीन्स it is clear that tension is more than weight, that means lift is moving vertically upward। तो ये डिसाइड हो गया। वर्टिकली अपवर्ड के केस में टेंशन होता है mg प्लस ma। ये दिया है 28,000,
mg निकाल चुके हैं 20,000, मास 2000 है। अब 8,000 इक्वल टू ट्रांसफर कर दीजिए 2000 a, so a will be 4 meter per second square. The answer is B. Sorry. So this way we can solve this question. आप इसको नोट कर लीजिए। इट इज वेरी क्लियर, आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि जब लिफ्ट ऊपर जाएगा तब टेंशन ज्यादा होगा। प्रीवियस क्लास में आपको एक्सप्लेन किया था, when lift moves vertically upward tension is more than weight, और वेट क्या होता है, mg होता है, तो वो हमने निकाल लिया 20,000, और यहाँ दिया हुआ टेंशन कितना, 28,000। तो आपको फॉर्मूला डिसाइड कर लिया आपने, mg प्लस ma लगेगा। अगर वेट कम होता तो फॉर्मूला लगाते mg माइनस ma। when cable moves vertically downward tension is less than weight। और देखिए ये बात बिल्कुल क्लियर है, ये देखिए ऐसे केसेस में टेंशन वेट से क्या है, ज्यादा है। टेंशन इज ग्रेटर देन वेट, टेंशन इज लेस देन वेट एंड टेंशन इक्वल टू वेट। ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर कंसेप्ट है। तो एक्सेलरेशन आ गया आपका 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नाउ लिफ्ट इज मूविंग इन विच डायरेक्शन, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ये बहुत सिंपल है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइम पीरियड of a simple pendulum is measured inside a stationary lift, is found to be t second if the lift starts accelerating upward with acceleration g by 3, then time period is then time period is the question has got 4 answers. Root 3t, second answer root 3t divided by 2, third answer t upon root 3, fourth answer t by 3। तो देखिए टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, सबसे पहले बात करते हैं टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम is given by t equal to 2 pi by root of L by G when lift is stationary
or moving with constant speed. Or time period will be when lift moves vertically upward, then time period will be, then time period is t dash 2 pi root of L upon G plus A. ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। और ये कहा जाता है कि लिफ्ट इज मूविंग वर्टिकली डाउनवर्ड, तो फिर हम टाइम पीरियड को व्हाट वी कैन राइट द टाइम पीरियड एज, we can write the time period as t equal to 2 pi L upon G minus A. इसको नोट कर लीजिए। तो अब हम डिवाइड करके इस रिजल्ट को फाइंड आउट कर लेंगे, बहुत आराम से हम इसको निकाल लेंगे। और द लिफ्ट स्टार्ट्स एक्सेलरेटिंग, लिफ्ट का एक्सेलरेशन कितना है, g/3, g/3। तो हम a को कितना पुट करने वाले हैं, g/3, विल पुट a as g/3। तो इस केस में टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई g प्लस g/3, g प्लस g/3। अगली स्लाइड पर मूव करते हैं। सॉरी, तो टी डैश हम निकाल लेंगे, 2 पाई g प्लस g/3, तो इट विल बिकम 2 पाई 4g/3, so t dash will become 2 pi 3l upon 4g. It can be written as √3/2, 2 pi root of L by G, that is T. So the answer is B. So the B is the correct answer. और ये आपकी किसकी वैल्यू है, T की वैल्यू है। So the correct answer is B. Let's move to the another question. It's very simple. These questions are very simple. You should practice. Okay, next question. A person of mass 60 kg is standing on a weighing machine inside a lift. If lift
starts accelerating downward with acceleration 5 meter per second square. What will be the reading of weighing machine? Take G equal to 10 meter per second square. देखिए वेइंग मशीन रीड्स मास, तो रीडिंग ऑफ मास चाहिए हमें, रीडिंग ऑफ अपरेंट मास। वो होगी n बाय जी, जो कि लिफ्ट नीचे की तरफ जा रही है mg माइनस m अपॉन g, so that will be m is taken out 1 minus a by g, 60 into 1 minus 5 by 10, 60 into 1 minus 1 by 2 will be 60 into 1 by 2, so the answer is 30 kg. Lift is moving vertically downward. Lift is moving vertically downward. So the answer is अब इस तरह के आप बहुत सारे क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। These are simple question, just याद रखिए कि फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है। अब एक छोटा सा सब टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे। आई थिंक यू आर डन विद इट। हमेशा याद रखिए रीडिंग ऑफ अपरेंट मास n बाय जी होगा, और n के आप जानते हैं तीन केसेस हैं, mg प्लस ma, mg माइनस ma और n इक्वल टू mg, as I have explained you in the previous class. अब हम एक नया कंसेप्ट पे काम करेंगे। Impulse denoted by I. It is a vector quantity. Impulse of a force is defined as the product of force and time, product of force F and time t, for which it acts upon a body, तो इम्पल्स निकालना बहुत सिंपल है। फोर्स को टाइम से मल्टीप्लाई कर दो। मान लो फोर्स एफ टी टाइम तक एक्ट करता है, तो इम्पल्स को हम कैसे निकालते हैं, फोर्स को मल्टीप्लाई करिए टी टाइम से, फोर्स इंटू टी। ये तो हो गया पहला कंसेप्ट। अब सेकंड कंसेप्ट आप लिखिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इम्पल्स को कैसे मेजर किया जाता है। इम्पल्स इज मेजर्ड बाय the change in momentum, by the change in momentum, change in momentum। तो इम्पल्स को आप लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन में भी बोल सकते हैं 0 to t f dt। अगर ये फॉर्मूला हम तब यूज करते हैं जब f क्या होगा, वेरिएबल होगा,
और दूसरी चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इम्पल्स को हम लिखते हैं चेंज इन मोमेंटम, एम वी माइनस एम यू, एम वी माइनस एम यू। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, चेंज इन मोमेंटम। तो किसी भी बॉडी का चेंज इन मोमेंटम आप कैलकुलेट कर लीजिए। और मोमेंटम को चेंज करने वाला फैक्टर कौन सा होता है? फोर्स होता है। फोर्स इज द कॉज which changes the momentum, which changes the momentum। हमेशा हमें इस बात को याद रखना चाहिए। इसके अब हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे, then I will try to explain you the concept of momentum। तो इम्पल्स कैसे निकालेंगे? एक तरीका तो है, मान लीजिए फोर्स F t सेकंड तक किसी बॉडी पर लगता है, तो इम्पल्स निकालने के लिए फोर्स को किससे मल्टीप्लाई कर दो? टाइम से मल्टीप्लाई कर दो। या बॉडी का मोमेंटम, जब हम किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो बॉडी का मोमेंटम चेंज हो जाता है, या चेंज इन मोमेंटम निकाल लो। अब देखिए एक एग्जांपल से आपको ये क्लियर करते हैं। सपोज करिए a cricket ball is moving with a momentum 50 kg मीटर, ये इसकी यूनिट होगी, पर सेकंड, is stopped by a player। तो इनिशियल मोमेंटम क्या है? इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉल, अब इसको समझने की बहुत जरूरत है। दिया हुआ है 50, प्लेयर ने उसे रोक लिया, तो फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉल क्या हो गया? फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉल, प्लेयर ने उसे स्टॉप कर लिया, 0। तो बॉल रुक जाएगी, बॉल रुक जाएगी तो बॉल का मोमेंटम कितना हो जाएगा? 0। तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉल कितना हुआ? चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉल, एक एग्जांपल ले रहे हैं, 50 माइनस 0 दैट इज 50। तो चेंज इन मोमेंटम, और आप जानते हैं इम्पल्स, इम्पल्स क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। तो इम्पल्स होता है फोर्स इनटू टाइम। ये कितना आ गया? 50। अब देखिए हम एग्जांपल्स ले रहे हैं। मान लीजिए कि बॉल को हमने 1 सेकंड में रोका। मान लीजिए कि प्लेयर ने बॉल को 1 सेकंड में स्टॉप किया, तो कितना फोर्स लगाया होगा? 50 न्यूटन। मान लीजिए प्लेयर ने 2 सेकंड में बॉल को स्टॉप किया, तो कितना फोर्स लगाया होगा? फॉर्मूले में रख दीजिए, ये फॉर्मूला है हमारा। फोर्स 25 सेकंड लगाया होगा। मान लीजिए प्लेयर ने बॉल को 5 सेकंड में रोका, तो कितना फोर्स लगाया होगा? 10 न्यूटन। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे जैसे हम टाइम बढ़ाते जाएंगे, फोर्स की वैल्यू क्या होती जाएगी? जैसे जैसे हम टाइम बढ़ाते जाएंगे, फोर्स की वैल्यू क्या होती जाएगी? फोर्स की वैल्यू क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। तो स्टॉपिंग टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा जब प्लेयर्स बॉल को कैच करते हैं, क्रिकेट के मैच में देख लीजिए, एग्जांपल ले लीजिए, व्हेन अ फील्डर कैचेस द बॉल, इसका मतलब क्या है? वो फील्डर बॉल को रोक रहा है, स्टॉप कर रहा है, कैच कर रहा है। तो कैचिंग, अगर वो आगे जाके बॉल को कैच करेगा तो स्टॉपिंग टाइम कम हो जाएगा। स्टॉपिंग टाइम कम हो जाएगा तो बॉल, वो फोर्स जिससे वो बॉल को कैच करता है, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन अगर प्लेयर स्टॉपिंग टाइम को इंक्रीज कर ले,
अगर ऐसा भी तो हो सकता है कि प्लेयर स्टॉपिंग टाइम को इंक्रीज कर ले, वो अपने हैंड को पीछे की तरफ लाए, बॉल को कैच करते वक्त हैंड को क्या करे, मूव बैकवर्ड। तो जब अगर वो हैंड को पीछे की तरफ लाएगा तो स्टॉपिंग टाइम बढ़ जाएगा। स्टॉपिंग टाइम बढ़ जाएगा तो क्या होगा, बॉल को रोकने के लिए रिक्वायर्ड, बॉल को रोकने के लिए रिक्वायर्ड फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो इंजुरी नहीं होगी, तो उसको इंजुरी नहीं होगी। तो इसको अब हम लिखना चाहते हैं अगले स्टेप में। ओके, तो वी विल राइट इन नेक्स्ट स्टेप, इस एप्लीकेशन को while कैचिंग, कैच कर रहा है, कैचिंग अ फास्ट मूविंग बॉल, फास्ट मूविंग बॉल। और चलिए हम इसको ऐसा लिख देते हैं, फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल, फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल। अ प्लेयर लोअर्स, लोअर्स का मतलब पीछे की तरफ हाथ ले रहा है, लोअर्स हिज हैंड्स टू अवॉइड द इंजुरी। तो देखिए, बाय डूइंग सो, ये लिखना जरूरी है, बाय डूइंग सो द प्लेयर increases the time of catch। अभी आपको पिछली स्लाइड में बताया था, that means he increases the time interval to reduce the momentum of ball to zero। So by doing, so by increasing, by increasing the time of catch, player reduces the value of stopping force। इसको आप लिख लीजिए। और सबसे पहले अब हम आज इम्पल्स पर कुछ क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करना चाहेंगे वन बाय वन। तो इम्पल्स बहुत क्लियर है, कंसेप्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम कुछ छोटे छोटे से केसेस करेंगे।
देखिए एप्लीकेशन पार्ट 1, बॉडी ऑफ मास m, बॉडी ऑफ मास m कोलाइड्स, टकरा जाती है, कोलाइड्स अगेंस्ट अ वॉल, collides against a wall with velocity v and rebounds, वापस लौटेगी, rebound करेगी, rebounds with the same speed, with the same velocity, with the same velocity, with the same velocity. Its change in momentum, its छोटे छोटे क्वेश्चन करेंगे पहले. Change in momentum is first answer 2 mv, second answer minus 2 mv, third answer minus mv, fourth answer 0. अब देखिए ये बॉल है हमारी, इसकी स्पीड कितनी है v, मास कितना है m, तो इनिशियल मोमेंटम कितना हो गया, मास इनटू वेलोसिटी. अब ये कहा गया है ये बॉल रिबाउंड करती है उतनी ही वेलोसिटी से, रिबाउंड करती है तो वापस लौटती है, तो यहाँ वेलोसिटी लेंगे माइनस v, तो फाइनल मोमेंटम कितना हो गया, of ball will be m into minus v, so it is minus mv. अब change in momentum of ball, change in momentum of ball, ऐसे निकालते हैं, पॉजिटिव वैल्यू से नेगेटिव वैल्यू को माइनस कर देंगे. तो आप मुझे बताइए, आपने इसे नोट कर लिया. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा. रिबाउंड कर रही है, लौट रही है, इसलिए हमने उसकी वेलोसिटी माइनस वी ली. अब चेंज इन मोमेंटम के लिए फाइनल मोमेंटम से हमने इनिशियल मोमेंटम को नहीं माइनस किया. रीजन क्या है, पॉजिटिव वैल्यू बड़ी वैल्यू होती है और नेगेटिव वैल्यू छोटी वैल्यू होती है, तो हमेशा आप इस बात को ध्यान रखिएगा. अब देखिए इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन आया था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, हम उसको करेंगे. कुछ क्वेश्चंस हम लोग इसलिए भी करते हैं कि हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए. ओके. एन स्मॉल बॉल्स each of mass m collides elastically each second on a surface with velocity v.
the force experienced by the surface is. Four answers: M and U, 2M and U. Third answer, 4M and U. Fourth answer, 1 by 2 M and U. अब देखिए, collides elastically. और कोलाइड होने के बाद वापस लौटेगी, इलास्टिक कॉलिजन है। इलास्टिक कॉलिजन में वेलोसिटी नहीं बदलती क्योंकि वो वापस लौट रही है, तो वेलोसिटी की वैल्यू जरूर माइनस होगी। तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ वन बॉल, चेंज इन मोमेंटम ऑफ वन बॉल इज 2mu, अभी हमने किया था। सो चेंज इन मोमेंटम ऑफ n balls will be 2m and u. Using the formula F into T is equal to change in momentum force, टाइम दिया हुआ है 1 सेकेंड, चेंज इन मोमेंटम 2m and u, so force will be 2m and u. The answer is B. So this is a very useful formula. ओके, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो हमेशा आप याद रखिए F into T is क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम। अब एक और एग्जांपल करते हैं। वो भी सिंपल है। अ क्रिकेट बॉल of mass 250 grams, of mass 250 grams collides with a bat with velocity 10 meter per second, with velocity 10 meter per second, and returns with same velocity, returns with same velocity within 0.01 seconds. The force exerted on bat
is, now we have got four answers. 25 Newton. Second answer 50 Newton. Third answer 250 Newton. Fourth answer 500 Newton. तो सॉल्यूशन कर लेते हैं. F into T will be 2 mu. डायरेक्ट अप्लाई कर देते हैं. टाइम इज गिवन 0.01 सेकंड. 0.01 टू मास 250 ग्राम. ग्राम को केजी में कन्वर्ट करिए. वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड. तो F into 1/100 will be equal to 5. F will be equal to 500 Newton. And you got this answer. क्योंकि अब हम पढ़ चुके हैं, अब हमें मालूम है इलास्टिक कोलिजन का हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं. तो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं. ये एक नीट एग्जामिनेशन में आया हुआ क्वेश्चन था. तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं. A ball of mass 0.5 kg moving with a velocity 2 meter per second. 2 meter per second strikes a wall normally and bounce back with the same velocity. With the same velocity. With the same velocity. If the time of contact if the time of contact between ball and wall is 1 millisecond. 1 millisecond. The average force exerted by the wall on the ball is. The question has got four answers. 2000 Newton. Second answer is 1000 Newton. Third answer is 5000 Newton. Fourth answer is 125 Newton. So this is the question from previous year paper. अब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे. We will apply the formula F into T equal to 2 mu. So F will be 2 mu upon T.
हम वैल्यू पुट कर देंगे 0.5 kg, वेलोसिटी 2, टाइम 1 मिलीसेकंड, 1 मिलीसेकंड को आप उसमें बदलिए। अब देखिए यहाँ पर 0.5 कैंसिल हो जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा 2000 न्यूटन। So the answer is A. So now we will move to the next slide. देखिए क्वेश्चन हम लिफ्ट में करते हैं। A lift is moving down with acceleration A. A man in the lift drops a ball inside the lift. The acceleration of ball as observed by, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, as observed by the man in the lift and the man standing stationary on the ground is, तो पहला आंसर है, दोनों जी देखेंगे। दूसरा आंसर है लिफ्ट के अंदर वाला जी माइनस ए देखेगा, बाहर वाला जी देखेगा। और तीसरा आंसर है अंदर वाला जी प्लस ए देखेगा, बाहर वाला जी देखेगा। चौथा आंसर है अंदर वाला ए देखेगा, बाहर वाला जी देखेगा। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। ये आंसर हमारा करेक्ट है, क्योंकि जब लिफ्ट, देखिए एक्सप्लेनेशंस का भी एक रीजन है। देखिए जब लिफ्ट डाउनवर्ड जाती है तो एक्सलरेशन इनसाइड द लिफ्ट क्या होगा, जी माइनस ए। लेकिन ये उसके लिए होगा फॉर ए पर्सन हु इज इनसाइड द लिफ्ट, हु इज इनसाइड द लिफ्ट।
तो आप इसको नोट कर लीजिए. दिस क्वेश्चन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट. For an observer on the ground, the acceleration will be g. Inside g minus a. Inside g minus a. हमेशा आप इस बात को ध्यान रखें. अंदर वाले के लिए क्या होगा? g माइनस ए. बाहर वाले के लिए क्या होगा? बाहर वाले के लिए क्या होगा? g प्लस ए. बाहर वाले के लिए क्या होगा? g प्लस ए. अब देखिए, एक बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया था कि मास ऑफ ए मैन इज 55 kg. ऐसे हम इसे ओरली कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस को. A person is measuring a person is standing on a weighing machine. और जब पर्सन वेइंग मशीन पे खड़ा है, स्टैंड कर रहा है, तो वो ऑब्जर्व करता है कि उसका जो मास है, फिजिक्स का मास, मेडिकल लैंग्वेज में वेट 55 kg है. और ये तब मेजर करता है जब लिफ्ट रेस्ट में है. अब वो लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करना स्टार्ट कर देती है. लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करना स्टार्ट कर देती है, तो वो कितना वेइंग मशीन में रीडिंग देखेगा? 55 ही देखेगा. रीडिंग तभी चेंज होगी जब लिफ्ट या तो एक्सेलरेशन से अपवर्ड मूव करे. अगर लिफ्ट एक्सेलरेशन से अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी तो रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन विल बी मोर देन वेट. ये बातें आपको, सारी बातें आपको याद रखनी चाहिए. नॉर्मल रिएक्शन mg माइनस ma, मास, apparent mass, n by g, apparent acceleration, और अगर लिफ्ट ऊपर जा रही है तो n होगा mg प्लस ma, और n by g होगा apparent mass, पिछली क्लास में बताया था. और n by m होगा apparent acceleration. ये उस केस में होगा जब लिफ्ट इज मूविंग वर्टिकली अपवर्ड. कब होगा? जब लिफ्ट कहाँ जा रही है? वर्टिकली अपवर्ड जा रही है. apparent acceleration. And जब स्टेशनरी हो, when lift is stationary or moving with constant velocity, तब नॉर्मल रिएक्शन क्या होती है? mg के इक्वल होती है. ये अब छोटी छोटी बातें हैं, आपको इसे याद रखना चाहिए. इसे याद रखिए. तो क्लास को एंड करते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में.